Hello students, welcome to SEMA classes. I am Monica Gupta. Today I am going to teach you LCM and SCF. Before going to SCF and LCM, I want to teach you prime factorization. What is prime factorization? See guys, prime factorization. The most important thing you have to notice, in prime factorization, you use only prime numbers. Never try to use composite numbers. Always try to use prime numbers. See how we use prime numbers in prime factorization. Take an example. I am going to take an example of 84. Do prime factorization of 84. First prime number is 2. So divide 84 by 2. So you have to write 2 here and the quotient is below that number. Okay. Now 42 is again divisible by 2. Then do it again. Write 2 here and the quotient is below down. इसके जस्ट नीचे इसका क्वोशिएंट लिखना है और जिससे आप डिवाइड करते हो वो हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए. नाउ 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट yes it is divisible by 3. So now divide by 3. Write here 3 and the quotient is below 21. That is 7. 7 is a prime number. So 7 ones are 7. So prime factors of 84 is 2 into 2 into 3 into 7. This is the prime factorization. Now second one is factor tree. Similarly, you find the prime factorization by making a factor tree. See how. How we make factor tree. For this, I am going to take an example of 48. 48 is divisible by 2. Draw like this. Write here 2 and the quotient is right hand side. That is 24. 2 is a prime number. So circle the prime number. Again 24 के साथ 2 here and that is 12. 2 is a prime number. Circle it. For 12. 2, 6. 2 is a prime number. Circle it. 3. 2, 3 is a 6. Both are prime numbers. Circle it. Now prime factors of 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay. This is the factor tree. By factor tree you also find the prime factors of that number. Now you very well know about the prime factorization. Now come to SCF. SCF है कि दो मेथड है. One is prime factorization method and the second one is long division method. So first I am going to tell you about prime factorization method. Find SCF by prime factorization method. For this I am going to take an example 20 and 24. Find the SCF of 20 and 24. Do prime factorization of 20. 2 tens are 10, 20, then 2 5s are 10, 5 ones are 5. 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3, 3 ones are 3. Then prime factors of 20 is 2 into 2 into 5. Prime factors of 24. 2 into 2 into 2 into 3. First we find common factors before going to SCF. Highest common factor. Common factors are, how you find common factors? See, this 2 is common, this 2 is common and nothing is common in both the factors. So common factor is 2 into 2. SCF is equals to 4. इसका एक और आसान मेथड मैं आपको बताती हूँ.
कि देखो 20 में 2 2 टाइम्स है, 24 में 2 3 टाइम्स है, यहाँ 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो आप कॉमन फैक्टर में 2 बार लिखोगे, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यू हैव टू राइट कॉमन फैक्टर्स 2 टाइम्स, तो यू राइट 2 टाइम्स, आपने 2 बार लिख दिया। आगे देखो यहाँ 5 एक बार है, 1 टाइम्स है, और इसमें 5 नहीं है, तो आपने 5 नहीं लिखा। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 नहीं है, तो आपने कॉमन फैक्टर में भी नहीं लिखा। तो नाउ योर HCF इज 4। नाउ डू HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। टेक एन एग्जाम्पल 78 and 198. Make 78 a divisor and 198 as a dividend. छोटे वाले नंबर को आप डिवाइजर बना दीजिए और बड़े वाले नंबर को आप डिविडेंड बना दीजिए। डू इट। 78 2 जा 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 और 1 15, माइनस करो 242। अब ये 42 आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये 78 आपका डिविडेंड बन जाएगा। 42 1 जा 42, माइनस किया 36। अब ये 36 आपका डिवाइजर बन जाएगा और 42 आपका डिविडेंड बन जाएगा। 36 1 जा 36, माइनस करो, दैट इज 6। अगेन 6 आपका डिवाइजर बन जाएगा और 36 आपका डिविडेंड बन जाएगा। हम ये काम जब तक करते जाएंगे जब तक कि हम 0 ना आ जाए हमारा एज अ रिमाइंडर। 6 6 जा 36, नाउ माई रिमाइंडर इज 0, तो माई HCF ऑफ 78 and 198 is 6. Okay, hope you all understand this. Now come to LCM. LCM के भी 2 मेथड हैं सेम, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर दिस टेक एग्जाम्पल 28 and 98. Find the LCM of 28 and 98. Do prime factorization of both the numbers. 2 14s are 2 7s are 7 1s are 7. 98 का 2 into 49, 7 1s are 7, 7s are 7 1s are 7. तो prime factors of 28 is 2 into 2 into 7. Prime factors of 98 is 2 into 7 into 7. Common multiple क्या हो गया? Think about HCF. मैंने क्या बताया था कि इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो हमने HCF में 1 बार लिखा था, लेकिन LCM में इसका उल्टा, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो मैं ज़्यादा वाला लिखूंगी, यानी कि मैं 2 बार लिखूंगी 2 into 2। 7 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो मैं 2 बार वाला लिखूंगी 7 into 7। नाउ अवर LCM is 2 2s are 4 into 49, that is 6 196, तो LCM is 196। LCM of 28 and 98 is 196. Now the next method is long division method. Find LCM by division method. Take an example for this. 36, 40 and 126. Find the LCM of these 3 numbers. अब इसके लिए हम इन तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों को इकट्ठा 2 से डिवाइड कर दो। 18 20 63, again by 2 9 10, but 63 is not divisible by 2, so copied it 63, again by 2 9 5 63, because 9 is not divisible by 2, तो मैंने 9 को कॉपी कर लिया।
10 मेरा डिविजिबल था, 2 5 10, 63 इज नॉट डिविजिबल, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया. नाउ बाई 3 5 नहीं डिविजिबल है, मैंने 5 को कॉपी कर लिया एंड दैट इज 21. अगेन बाई 3 1 5 7. नाउ बोथ आर प्राइम नंबर्स. 5 and 7 are prime numbers. So LCM of this is 1 2 3. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7. Multiply it. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 3 3s are 9. 5 7s are 35. 8 9s are 72 into 35. That is, multiply करो 72 into 35 रफ में. 10 कैरी लगा 1, 35 1 36, 3 2 जा 6, 4 3 जा 7 3 21. 0 12 का 2 कैरी लगा 1, that is 5 and 2. 2520 is the LCM of 36, 40 and 126. Okay, now is your, I think this is the chapter playing with numbers is finished here. Hope you like my videos. Please subscribe my channel and don't forget to press bell button so that you get the notification of my new videos. Till then, goodbye. Thank you.